Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss a numerical on the reverse saturation current of the diode. So let's get started with the numerical. So let us see what the numerical gives. It is written that it is predicted that for germanium, तो diode जो है वो germanium का है, the reverse saturation current I0 increases by 0.11 degree per centigrade. So 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने से मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है 0.11 ऑफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट I0. It is found experimentally in a particular reverse bias voltage of 10 volt. So that means if we give a 10 volt of reverse bias voltage, the reverse current is 5 microampere. तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, the reverse current, और यहां पे क्या लिखा है, reverse saturation current. So these terminology are very important. You have to understand this terminology. We will understand this terminology also. And the temperature dependence is 0.07 per degree centigrade. मतलब ये जो reverse saturation current है, this reverse saturation current is increasing 0.07 per degree centigrade. Find the value of the leakage resistance shunting the diode. So we have to find the leakage resistance which is shunting the diode. So that means to understand or to do this numerical, you have to understand this terminology. This is very important. The reverse saturation current and the reverse current. What is the difference between the reverse current and the reverse saturation current? So for that purpose, first take a diode. So let us take a diode. So if we draw the block diagram of a diode, so this is the block diagram of a diode, suppose. This is the P region, this is the N region, this is the P terminal, this is the N terminal. So this is the block diagram of a diode. Now we have to apply a reverse bias voltage. So if we apply a reverse bias voltage, then P side में कौन सा voltage आएगा? P side में आपका नेगेटिव पोटेंशियल और N side में आपका पॉजिटिव पोटेंशियल. So that means the potential will look like this. So this is the applied potential, V applied, and we have applied a reverse potential. That's why we have given VR. VR means the reverse potential, P side में negative और N side में positive. So now the diode is in reverse bias. So in this reverse bias, what will happen? A current will flow through the circuit. तो पहला एक करंट यहाँ पे फ्लो होंगे. So this is I0 dash. Suppose this is I0 dash, and another current will flow through this junction. ये जो junction है, इस junction के through एक current flow होगा. Let us name this current as I0. So now my question is this I0 dash is equals to this I0? No. The answer is no. This I0 dash, ये जो I0 dash है, I0 dash, this I0 dash is called the reverse current. Reverse current का मतलब the current flowing through the circuit in the reverse bias. And what is this I0? I0 का मतलब होगा कि this is nothing but the reverse saturation current. Or we can say the reverse current that is flowing through the junction. जंक्शन के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है. तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है. I0 डैश इज नॉट इक्वल्स टू I0. मतलब और एक कंपोनेंट ऑफ द करंट है जिसको हम लोग बोलते हैं द सरफेस करंट. जो ज्यादातर बुक में क्या होता है कि इसको इग्नोर किया जाता है और बोला जाता है कि रिवर्स करंट इज इक्वल्स टू रिवर्स सैचुरेशन करंट. एक्चुअली इट डज नॉट हैपेंस. एक्चुअली क्या होता है कि I0 के साथ और एक सरफेस जो होता है, डायोड के जो सरफेस होता है, इस सरफेस के थ्रू एक करंट फ्लो होता है, सरफेस करंट. दिस इज कॉल्ड द सरफेस करंट IS. एंड द रिलेशन लुक्स लाइक दिस कि मेरा जो I0 डैश होता है, दैट इज द टोटल रिवर्स करंट, इज इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन, दैट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, प्लस this surface current. So this is the equation that you can see right now.
सो दैट मीन्स वी कैन सी दैट ये जो मेरा रिवर्स करंट होता है, दैट रिवर्स करंट इज नॉट इक्वल्स टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट, एंड द रिवर्स करंट इज इक्वल्स टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट प्लस द सरफेस करंट. तो सरफेस करंट होना चाहिए. नाउ ये जो सरफेस करंट होता है, दिस सरफेस करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट. दैट मीन्स इफ आई ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट, द सर्किट विल लुक लाइक दिस. तो यहां पे पी एन डायोड है, तो मैं एक पी एन डायोड यहां पे लूंगा, यहां पे एक पी एन डायोड. सो दिस इज द पी रीजियन एंड दिस इज द एन रीजियन. So this is the P region, this is the N region. Now it has been connected with reverse bias voltage. So यहाँ पे negative, यहाँ पे positive, तो एक reverse bias voltage that is VR. So this is positive, this is negative. और ये जो surface current है, इस surface current को दिखाने के लिए ये जो डायोड है, इस डायोड के अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है टू रिप्रेजेंट दिस सरफेस करंट, एंड दिस इज कॉल्ड द आरएस रेजिस्टेंस. एंड द करंट आईएस, ये जो आईएस करंट है, दिस आईएस करंट विल फ्लो थ्रू दिस, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड is I0 and the current flowing through the circuit is I0 dashed. In this way, these two current is represented. Actually, ये जो RS है, this RS is called the shunt leakage resistance, which represent the surface current. So now, what we have got that I0 dash is equals to I0 plus IS, और इस IS को represent करने के लिए मेरे पास एक leakage resistance shunt में connect किया गया है. So now, अब देखिए मेरा जो VR है, सेकेंड लाइन पे क्या बोला है कि इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली इन अ पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट. दैट मीन्स राइट नाउ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज 10 वोल्ट, एंड इस 10 वोल्ट के लिए मेरा जो रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 5 माइक्रो एम्पियर. दैट मीन्स ये जो रिवर्स करंट है दैट इज 5 माइक्रो एम्पियर. केयरफुली आप देखिए, ये रिवर्स करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं. सो दैट मीन्स दिस इज द रिवर्स करंट. अब ये जो आरएस है, इस आरएस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो आरएस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होंगे? ये भी 10 वोल्ट ही आएंगे. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट द वोल्टेज अक्रॉस द आरएस, VRS इज इक्वल्स टू ऑल्सो 10 वोल्ट. और इसके अंदर कितना करंट जा रहा है? इसके अंदर आपका करंट हो रहा है IS. So I can write the value of RS as V of RS divided by IS. So we can write this relation where RS is the leakage shunt resistance. Now मेरे पास ये वाला इक्वेशन था और ये भी बोला गया है कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो क्या हो रहा है? मेरा 0.11 डिग्री पर सेंटीग्रेड में चेंज हो रहा है. सो दैट मीन्स वो वाले इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे इक्वेशन में लिख सकता हूं कि I0 डैश और I0, यहां पे I0 है, I0 डैश नहीं, रिवर्स सैचुरेशन करंट में बोल रहा हूं तो I0. तो I0 by dt, where T is the temperature, that is nothing but 0.11 I0. Another thing it is given that the reverse current is 5 microampere and the temperature dependence of the reverse current I0 dash is 0.07 per degree centigrade. So that means I can also write dI0 dash by dt is equals to 0.07 of I0 dash. So this is the information that is given right now. Now we have to find this value of this leakage resistance. ये leakage resistance आपको चाहिए. अब देखो, तो मेरे पास इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन. नाउ मैंने क्या देखा कि ये जो सैचुरेशन, ये जो सरफेस करंट होता है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो सरफेस करंट होता है, ये सरफेस करंट IS, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होता है. दैट मीन्स दिस IS इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. सो इफ आई do the derivative of this equation with respect to temperature, then it will be dI0 dash by dt is equals to dI0 by dt
प्लस 0, बिकॉज ये IS आपका क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस होगा, तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर IS को तो 0 आ जाएंगे। सो ये वाला इक्वेशन आपके पास आया। नाउ अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन आया दैट इज di0 डैश बाय dt इक्वल्स टू मेरा क्या आया, di0 बाय dt, ये वाला इक्वेशन आया। सो दैट मीन्स अब देखो यहां पे क्या है, di0 बाई dt जो है, di0 बाई dt इज 0.11 I0, तो यहां पे लिखिए 0.11 ऑफ I0। अब यहां पे क्या है, di0 डैश बाई dt, यहां पे पुट कीजिए तो आपके पास आएंगे 0.07 ऑफ I0 डैश। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I0, तो I0 का वैल्यू क्या आएगा, I0 का जो वैल्यू आएंगे दैट इज 0.07 डिवाइडेड बाय 0.11 इंटू I0 डैश। सो अल्टीमेटली आपका वैल्यू क्या आएंगे, I0 इज इक्वल्स टू 7/11 इंटू I0 डैश। सो दिस इज द इक्वेशन रिलेटिंग द रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये वाला, और द रिवर्स करंट I0 डैश। सो आपके पास ये वाला इक्वेशन आ गया। नाउ वी हैव अ रिलेशन दिस वन, ये वाला रिलेशन आपके पास है। तो फ्रॉम दैट रिलेशन आप देखिए क्या लिख सकता हूं मैं कि I0 डैश इज इक्वल्स टू I0 प्लस IS। Now if I replace this I0 by this equation, so what will be the equation? तो यहां पे मेरा I0 डैश है, यहां पे 7/11 है इंटू I0 डैश प्लस IS, ये वाला इक्वेशन। नाउ ये वाले I0 डैश को इधर लेके आइए तो मैं लिख सकता हूं मेरा जो IS होंगे दैट विल बी 1 माइनस 7/11 इंटू I0 डैश। सो अल्टीमेटली आपका वैल्यू क्या आएगा IS का, IS वैल्यू विल बी 11 माइनस 7 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 11 into I0 dash. So this is the relation between the surface current and the total reverse current. रिवर्स करंट का कितना हो रहा है, रिवर्स करंट का देखिए, रिवर्स करंट का 7/11 पोर्शन I0 में जाएंगे और 4/11% इधर जाएगा IS ओके। So this is the relation right now. Now if we want to find the value of RS, ये वाला वैल्यू मुझे चाहिए, ये वाला वैल्यू मुझे चाहिए। So now for that case, अब RS का वैल्यू क्या था, RS का वैल्यू आपके पास था VRS। What is VRS? VRS is nothing but 10 वोल्ट, तो यहां पे मैंने 10 वोल्ट लिखा। और IS वैल्यू है, IS वैल्यू कहां से आएगा, ये वाला इक्वेशन से IS वैल्यू आएंगे, दैट इज 4/11 इंटू I0 डैश। I0 डैश क्या था, 5 माइक्रो एम्पियर। सो यहां पे मेरा 5 माइक्रो एम्पियर को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻⁶। सो दैट मीन्स आपका जो फाइनल इक्वेशन आएंगे दैट इज 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 10⁻⁶। सो दिस एंड दिस वैल्यू विल बी कट आउट। सो दैट मीन्स आपका जो वैल्यू आएंगे दैट इज 11/2 और ये 10⁻⁶ यहां पे रहेगा। And this is ohm because we are finding the resistance volt by ampere, so it will come out to be 11/2 mega ohm. So this is the value of the shunt resistance that has been connected as the leakage resistance to the diode. So this is how we can calculate the leakage resistance of a diode in the reverse bias condition. The most important thing to understand here is the difference between this reverse current and the reverse saturation current. सो हमेशा याद रखना कि ये जो रिवर्स करंट है, ये रिवर्स करंट आपका सर्किट में टोटल करंट रिवर्स बायस में कितना जा रहा है, और जंक्शन के अंदर जो करंट जाएंगे दैट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, और सरफेस में जो करंट जाएगा दैट इज IS, एंड दिस IS is independent of the temperature but this I0 is dependent on the temperature. That's why ये जो IS है, इस IS को ये वाले शंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जाता है, शंट रेजिस्टेंस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड द रिवर्स करंट फॉर दिस न्यूमेरिकल। सो होपफुली you have enjoyed this numerical.
and thank you for watching the video.